Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premananda, Hare Krishna, Hare Rama. So today we have our session and you can see our audience translate. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी ऑडियंस हमारे बीच कितने लोग हैं यहाँ पे And we see Jagannath Baladev Subhadra Maya ki jai, Hare Krishna. Translate. अब हम जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं तो जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। And he is our Anuvadak. मैं आपका ट्रांसलेटर हूँ, अनुवादक हूँ। Okay, Hare Krishna, Hare Rama. Okay. So, the question to the participants of Zoom conference, the Anuvad is audible or not? So, could you repeat? The Anuvad is audible or not audible for Zoom conference, I'm asking. तो हमारे जो Zoom की ऑडियंस है वो एक बार अपने हैंड रेज या फिर बता सकती है कि जो अनुवाद मैं जो बोल रहा हूँ आपको ऑडिबल है या नहीं? Audible. Okay, thank you very much. So today we are going to discuss Bhagavad Gita as it is. तो आज हम भगवत गीता as it is यथारूप डिस्कस करेंगे। Discuss करेंगे। Hare Krishna. So you can see on the screen our slides on chapter 10, which is called the opulence of the absolute. तो चैप्टर 10 है
भगवान का यश यथारूप एब्सोल्यूट पूरे फॉर्म में। Or in Sanskrit, this chapter is called Vibhuti Yoga. संस्कृत में विभूति योगा कहते हैं इस चैप्टर को। Vibhuti Yoga. Okay, so we have this book. It is called Bhagavad Gita as it is. As it is means without any distortion. तो यह जो आप बुक देख रहे हैं ये भगवत गीता यथारूप है। यथारूप मतलब इसमें कोई भी ऐसा मिलावट या फिर पॉइंट ऑफ ओपिनियन की मिलावट नहीं है। Yatarupa, yeah? यथारूप। Yatarupa, okay. The opulence of the Absolute or Vibhuti Yoga means Supreme Lord is great, but it is not sufficient to know that He is great. We should know how great He is. What are manifestations of His greatness? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है, वो काफ़ी ग्रेट है, मतलब काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी बड़े हैं। तो हमें बिना किसी मैनिफेस्टेशन, बिना किसी सोच समझ के या फिर अपनी बुद्धि अनुसार उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। So this chapter is about how great He is, and also it is about how wonderful He is. तो ये चैप्टर कितने महान है तो उसके बारे में है ही, बट वो कितने वंडरफुल, कितने अच्छे हैं उस बारे में भी है। And how attractive He is, because Krishna is called all attractive. Yeah, He attracts everyone. So how He attracts everyone? It is this 10th chapter is about it. प्रभु जी बता रहे हैं जो 10वां चैप्टर है वो भगवान आकर्षित है इस बारे में भी बताता है। Okay, so what's going on? Okay, still it's working very good, somehow or another. Verse number 1. But before we will read the verses, we have, look on the screen, we have the structure. We have the structure of this chapter. तो पहले अगर हम भगवत गीता पढ़ने से पहले हमारी स्क्रीन के सामने ये भगवत गीता इन सब क्या क्या है उसमें, उसके बारे का स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें सब बता रखा है क्या क्या है। So you can see on the screen that the verses from 1st to the 7th of the 10th chapter is about that Krishna is the source of everything. प्रभु जी बता रहे हैं 10.1 जो 1 से 7वें श्लोक के बीच में बताया गया है कि कृष्ण ही सभी चीजों के सोर्स है, मतलब उन्हीं से सब चीजें उत्पन्न होती है। He is Sarva Karana Karanam, means he is cause of all causes. वो सभी कॉज, मतलब उनसे सब चीज होती है और वो सभी चीजों के कॉज है। Means whatever happens, ultimately it happens because of Krishna. जो भी होता है पूर्ण रूप से भगवान के लिए ही होता है। And Sarvakarana Karanam, it is from Brahma Samhita. Lord Brahma, he composed Brahma Samhita, and only the 5th chapter of Brahma Samhita we have, and other chapters are lost, unfortunately. प्रभु जी बता रहे हैं जो प्रभु जी ने श्लोक बताया वो ब्रह्म संहिता से है, और ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है, बताया गया है, और उसमें सिर्फ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश 5वां चैप्टर ही हमारे पास है। Only 5th chapter, only one chapter. पांचवा और इकलौता वही चैप्टर हमारे पास है। Ishvarah Paramah Krishnah Sachitananda Vigrahah Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. It is from Brahma Samhita, and Lord Brahma supreme, not supreme. He is not supreme Lord. Brahma is not supreme Lord. He is just Lord, simple Lord. So he composed this Brahma Samhita. He is Adi Guru of our Sampradaya. Yes. तो प्रभु जी बता रहे हैं जो ब्रह्मा जी है वो लॉर्ड है, वो भगवान है, बट वो परम भगवान नहीं है। परम भगवान सिर्फ श्री कृष्ण ही है, और बट वो हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, सबसे पहले गुरु ब्रह्मा जी। So he is source of everything. Ishvarah Paramah Krishna. He is the supreme Purusha, supreme ruler. प्रभु जी बता रहे हैं कृष्ण भगवान ही Ishvarah Paramah Krishna. He is Parama Ishvara. He is the highest Ishvara. ही सुप्रीम पर्सनालिटी, वही सबसे परम पूज्य है। Highest Ishvara means he is supreme controller. वो सभी चीजों को अपने नियंत्रित रूप से नियंत्रित करते हैं। Ishvarah Paramah Krishna. Then Sachit Ananda Vigrahah.
He is reservoir, he is form of Satchit Ananda, means eternity, knowledge and bliss. प्रभु जी बता रहे हैं सच्चिद आनंद का मतलब उनसे सोर्स है, मतलब वो इटर्नल हैप्पीनेस का मतलब उनसे जो खुशियां आती रहती है, वो जो खुशियां कभी कम नहीं होती, वो आती रहती है. Satchitananda Vigraha. Vigraha, Graha. In Vedic astrology, we are speaking about planets, we call them Grahas. Graha means something which, which grabs us, yeah? Grabs. Translate. प्रभु जी बता रहे हैं इसमें जो सच्चिद आनंद जो विग्रह बता रहे हैं, तो जो ग्रह है वो प्लानिटरी सिस्टम को बता रहे हैं, जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं, तो वो चीजें जो अट्रैक्ट करती है, जो हमें खींचती है अपनी तरफ. Grabs, not attracts, grabs. Like जो हमें this. पकड़ लेती है अपनी तरफ, खींचती है अपनी तरफ, पकड़ लेती है. Because you see, this karma, our karma influences on us. Shani, Rahu, and other things, other planets, other grahas, means they grab our destiny, and we become bound by some circumstances of our life, particular circumstances according to our karma. According to this astrological chart, there are particular periods when we are controlled by this part of our karma, but that part of our circumstances of life. प्रभु जी बता रहे हैं जिस प्रकार प्रभु जी ने ग्रहों के बारे में बताया, तो शनि बुध, तो इनका प्रभाव हमारी जिंदगी पे होता है. जिस प्रकार शनि हमें पकड़ लेता है, तो उनका प्रभाव बता रहे हैं हमारी लाइफ में होता है. It is called graha, but we are saying vigraha, Sachit Ananda vigraha. Vi means very. Translate. प्रभु जी बता रहे हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, इसमें ग्रह है और वी है, तो वी का Vi means very. वी मतलब इस वेरी It is English language. Very. V, E, R. अच्छा, वेरी. प्रभु जी बता रहे हैं वेरी बहुत ज्यादा है. We're translating from English language, right? Very means to, V-E-R-Y, V-A-R-Y. Okay, understand, Samaste. Okay, good. So, Satchitananda Vigraha, it means that Krishna can capture our attention, he can capture our life by putting us in this atmosphere of Sat Chit Ananda, eternity, knowledge and bliss. He can put us in this atmosphere, in this internal divine energy. प्रभु जी बता रहे हैं कि सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण हर चीज के करता है, तो वो हमें किसी भी चीज में पकड़ सकते हैं, मतलब, और डायमेंशन प्रभु जी ने बताई. Anadi Radhir Govinda means he has no birth. He is source of everything, means he has no birth, he has no source, he has no father or mother. Because of this father and mother, he exists, and without this father and mother, he could not exist. No, he is source of everything. That's why he is Aja. Aja means he is unborn. प्रभु जी बता रहे हैं कि वो अमर है और वो ही सब चीज के सोर्स है, उन्हीं से सब कुछ निकल रही हैं चीजें, और वो अमर है. प्रभु जी इस बारे में Anadi Radhir Govinda, he is primeval Lord, Supreme Lord. हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं वो प्रेमिवल है. इसका अर्थात ये है कि वो कहाँ से बॉर्न हुए हैं, जो पहले से जो Adi Govinda. Sarva Karana Karanam. He is cause of all causes. And how he is cause of all causes, we are going to analyze reading these verses from 1st to the 7th. प्रभु जी बता रहे हैं कि वो सभी चीजों के कर्ता धर्ता है और उन्हीं से सब चीजें हो रही है, तो इस बारे में हम सीखेंगे. Then we have the next section number 2, verses from 8 to 11. It is essence of Bhagavad Gita, how Supreme Lord interacts with his devotees. प्रभु जी बता रहे हैं ये एसेंस है भगवत गीता का, जिसमें जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं कैसे भगवान के साथ बात करते हैं और He interacts with his devotees. I told you. Okay, good. Very nice. And then Arjuna, because he is inquisitive, he is disciple, he is inquisitive, so he asks Krishna, tell me more. It is verses from 12 to 19. Tell me more. He asks Krishna to give more knowledge about himself, about Krishna.
जी बता रहे हैं कि 12 से 19वें श्लोक में जो अर्जुन है वो बहुत जिज्ञासु है, तो वो कृष्ण से पूछ रहे हैं, आप मुझे और बताइए, आप मुझे और बताइए। And he gives the knowledge in the next verses from 20 to 42. He explains some of his opulences, some of his vibhutis. Vibhuti means opulence. प्रभु जी बता रहे हैं 20 से 42 वाले श्लोक में वो बताते हैं उनको कि उनका किस तरह का ऐश्वर्य है, वैभव है, उस बारे में बताते हैं। We look around ourselves and we can see different wonderful things of this world, and actually some of these things are manifestations, direct manifestations of Krishna. हम अपने भी आसपास देख सकते हैं कि वो जो चीज़ें हमारे आसपास है वो भी कृष्ण द्वारा ही बनाई गई। So in that sense it is nice to observe life around us, because just by seeing some things around us it can remind us about Krishna. प्रभु जी बता रहे हैं कि कितनी सौभाग्य की बात है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और उन चीज़ों को देख के कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं कि उन्होंने वो चीज़ बनाई। Okay, we are going to the next slide. Source of everything. Verse number 10.1. प्रभु जी बता रहे हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण ही सब चीज़ों के सोर्स हैं, उन्हीं से सब चीज़ें निकल रही है। और हमारा जो श्लोक है वो 10.1 10.1। Shri Bhagavan Vacha, Buya Eva Mahabaho, Shrinume Paramam Vachach, Yateham Priyamanaya, Vakshyami Hitakam Ya. Translation. Be ready to translate. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge what is better than knowledge that is better than what I have already explained. प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे महाबहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। It is Bhagavad Gita. You read one chapter and Krishna says, I am giving you confidential knowledge. And the next chapter, you open the next chapter and he says, it was confidential knowledge, but now I am going to give you more confidential knowledge. And it goes like this from one chapter to another. प्रभु जी बता रहे हैं, भगवत गीता है, अगर आप इसके चैप्टर्स को खोलते हो तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये गुप्त ज्ञान है, और जैसे आगे बढ़ते रहते हो तो बताते हैं कि और गुप्त ज्ञान उसके बारे में आपको बताते हैं। It is normal because in these guru-disciple relationships, when these relationships are developing, disciple becomes worthy to get more and more confidential knowledge. प्रभु जी बता रहे हैं, ये डिसाइपल जो भक्त है उसकी रिलेशनशिप है, इसमें भगवान उसे बताते हैं और उसमें और जिज्ञासा होती है और जाने। Hare Krishna. So this is 10th chapter, and this 10th chapter is situated in the second part of Bhagavad Gita. Again, maybe you have heard about this, maybe not, but Bhagavad Gita is divided in 3 parts. प्रभु जी बता रहे हैं, ये 10वां अध्याय है और ये दूसरे पार्ट में भगवत गीता के स्थित है, और आप लोगों को पता होगा कि भगवत गीता के 3 हिस्से हैं। It is divided in 3 parts, so the first 6 chapters, from 1st to 6th, it can be called Karma Yoga. Karma Yoga means how to act in this world and how to dedicate our actions to Supreme Lord. प्रभु जी बता रहे हैं, पहला जो पार्ट है वो 1 से 6 अध्याय के बीच में है, जिसका शीर्षक कर्म योग है, और उसमें वो कर्म के बारे में बता रहे हैं। So it is about how to dedicate our activities to Supreme Lord. उसमें वो बता रहे हैं कि हम कैसे अपनी जो कार्य है उसको हम भगवान को समर्पित करके कर सकते हैं। So and the chapters from 7 to 12, it can be called Bhakti Yoga. It is about relationships between Supreme Lord and his bhaktas. प्रभु जी बता रहे हैं, जो 7 से 12 चैप्टर है वो भक्ति योगा के ऊपर है, जिसमें भगवान भक्ति योगा कैसे हमें करना है उसके बारे में ज्ञान देते हैं। So it is quite confidential knowledge. प्रभु जी बोल रहे हैं, ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है। Because if we will be analyzing Vedic scriptures
in general, mainly these scriptures are about how to achieve heavenly planets. प्रभु जी बता रहे हैं अगर हम अपने वैदिक और पौराणिक ग्रंथों को वापस देखेंगे तो उसमें हमें बताया जाएगा कि हमें कैसे अपनी भौतिक चीज़ों और उन अलग अलग देवी देवताओं को पाना है. Vedic scriptures are mainly 98 or 99% of Vedic scriptures. It is about karma kanda. It is about how to achieve heavenly planets, and not so much it is written about direct relationships with Supreme and about Bhakti Yoga. प्रभु जी बता रहे हैं 99% जो हमारे पुराण है वो कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं कि हमें कैसे कर्म कांड के बारे में बताते हैं कि कैसे हमें कर्म और उसके हमें जो फल मिलेगा उसके बारे में बताते हैं, बट भगवान और हमारे बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में नहीं बताते हैं. So Srila Prabhupada came to the West to preach Krishna consciousness when he was 69 years old. तो श्रील प्रभुपाद जी इनकी आप फोटो अपने पीछे देख सकते हैं, वो वेस्ट में आए जब उनकी उम्र 69 इयर्स की थी. And of course there was feeling that well, not for a long time I will be present on this planet. तो इस टाइम पे फीलिंग ये होती है कि हम इस टाइम पे धरती पे होंगे भी या नहीं होंगे. So he was instructed in his youth, he was instructed by Bhaktisiddhanta Saraswati to preach Krishna consciousness. So he was focused to give to all humanity, to give the essence of Vedic scriptures. And Bhagavad Gita as it is, and Bhagavata Purana or Srimad Bhagavatam, it is the essence. तो उनको उनके गुरु जिनकी आप फोटो ऑल्टर में देख सकते हैं प्रभुपाद जी के साइड में, उस साइड पे उनके Yeah, we have photo, but it is so small that you actually should not mention about this. Anyway, no one will see. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप बेस्ट मतलब पाश्चात्य देश बाहर जाइए और जो एसेंस है मतलब जो पूरा नेक्टर है इसका और बताइए, और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता उसका एसेंस है हमारे पुराण. You Prabhuji, please don't direct your foot to the altar. It is not good. प्रभु जी बता रहे हैं अपने पैर को कृपया भगवान की तरफ ना करें, वो अच्छा नहीं माना जाता है. Supreme Lord will not be satisfied with you. Maybe he even will punish you for that. भगवान आपसे संतुष्ट नहीं होंगे और आपको उसके लिए दंडित भी कर सकते हैं. Hare Krishna. It is related to our today's topic that Supreme Lord is great. If he is great, he can do everything with any of us, you know. प्रभु जी बता रहे हैं ये हमारे टॉपिक से ही हमारा आज का शीर्षक है उसी से रिलेटेड है कि भगवान ही सर्व करता है और वो हमें दंडित और कुछ भी हमारे साथ चाहे कर सकता है. So some kind of fear should be there, not such fear that makes us inactive. But some kind of fear and respect should be there. No. प्रभु जी बता रहे हैं हमारे अंदर कुछ घबराहट होनी चाहिए जो कि हमें एक्टिव यानी जो हमें जगाए रखे, ना कि सुलाए. Jagai? Why Jagai? I don't understand. Jagai means active. Okay. And Madai means what? Madai is not a word. Really? That's interesting. Okay, Hare Krishna. Okay, I'll have to take few Hindi language lessons from you, right? Hindi tutorials. Hindi tutorials. Hindi what? Tutorials. Hindi tutorials. Okay, good. Okay, Jagai, yeah? Jagai means to act? It has different meaning in terms of the different way we spoke. Jagai is different and Jagai is different. Okay, we'll discuss it later, okay. So, it is verse, so yeah, and the last 6 chapters, from 13 to 18, it is called Jnana Yoga. Jnana Yoga, not in the sense that it is some kind of impersonal jnana. Jnana Yoga in the sense that it is some kind of knowledge which helps one to practice Bhakti Yoga. It is Bhakti Jnana. प्रभु जी बता रहे हैं जो 15 से 18वां वो ज्ञान योग के ऊपर है. ज्ञान योग का वही अर्थ है जो हमें भक्ति योग भगवान से करीब आने के हेल्प करे. So here Krishna tells Arjuna, I will tell you more, I will give you more knowledge. यहाँ भगवान बताते हैं अर्जुन को
कि मैं तुमको और से अधिक ज़्यादा ज्ञान दूंगा। We're going to the next verse number 10.2. Neither the hosts or demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. ना तो देवतागण मेरी उपस्थिति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। Okay. So here it is in the purport, it is the second paragraph. We are going to read the second paragraph from the purport. It is important. It is interesting. What is the process of understanding who Krishna is? The process is described here in the purport to this verse 10.2. तो 10.2 श्लोक के अनुवाद है, उसके दूसरे खंड में बताया गया है कि कृष्ण कैसे हैं। It is in the purport, the second paragraph. Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present at the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme. One should know this. तो यहाँ बताते हैं, यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के स्वरूप में यहाँ हूँ, पर मैं परम भगवान हूँ। Although one cannot understand the inconceivable Lord who is personally present, he nonetheless exists. We can actually understand Krishna, who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying his words in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे, यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो वो भी विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपरा शक्ति में है और उनका ईश्वर अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निवर्ष्य ब्रह्मा रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। So it is the process of understanding who Krishna is. Krishna himself explains who he is. He explains it in this chapter also. तो हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कौन है, और उसमें इस वाले श्लोक में बताते भी हैं। And one can just accept it as it is. Book is called Bhagavad Gita as it is. Just accept as it is. प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत गीता यथारूप को हम अपने जीवन में भी यथारूप से ला सकते हैं। And Srila Prabhupada, he was telling that the minimum of qualification which is needed to study Bhagavad Gita or even to touch Bhagavad Gita, to open Bhagavad Gita, is that before you open or before you touch, you should at least theoretically accept that maybe Krishna is Supreme Personality of Godhead. Maybe. Means I'm not against this idea. I don't mind if he is Supreme Personality of Godhead. तो प्रभु जी बता रहे हैं सबसे छोटी क्वालिफिकेशन भगवत गीता पढ़ने के लिए यही है कि हमारे मन में ये होना चाहिए कि शायद कृष्ण सबसे सुप्रीम है, शायद कृष्ण सबसे सुप्रीम हो सकते हैं, सबसे बड़े हो सकते हैं। तो यही सबसे छोटी क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को छूने या फिर अर्थात पढ़ने के लिए। Because otherwise people, they can think that Krishna, it is just some kind of imaginary personality, like in some books, poems, and different characters are described of people who actually never exist. So some people, they can say that it is also imagination only. प्रभु जी बता रहे हैं कि कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण को दिखाया गया है कि वो एक सामान्य मनुष्य हो सकते हैं, या फिर वो एक ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो कि कभी हुए नहीं, स्टोरीज में प्रकार हम सुनते हैं। Some people, they can say that it is imagination. Some people, they can say that Krishna, he was there on this planet, but he was just ordinary human being like we are. प्रभु जी बता रहे हैं कि कई लोग ये सोच सकते हैं कि वो हमारी मन के द्वारा मन घड़ित हो सकते हैं, उनका जो व्यक्तित्व चरित्र है मन घड़ित हो सकता है, वो स्टोरी में हो सकता है। And some people, they can say that actually it was not Krishna, but it was impersonal Brahman who accepted particular form to interact with others. प्रभु जी
जी बता रहे हैं कई लोग ये भी कह सकते हैं कि वो कृष्ण थे ही नहीं, बट वो निरंकार ब्रह्म थे जो हमसे बात करने या उनके स्वरूप में आए। So we have few hundreds of purports to Bhagavad Gita written by different people who just wrote different ideas from their own minds, ideas of who Krishna is and what is all this book about. तो प्रभु जी बता रहे हैं हमारे पास अलग अलग अनुवाद है जो बताते हैं भगवत गीता को अपने रूप से, अपने तरीके से बताते हैं कि भगवान क्या है, भगवत गीता क्या है, उस बारे में प्रभु जी। But these purports are useless. It is the same way, like for example, if someone is a lawyer and he has to study law books, and sometimes they write purports to some laws, right? But who is eligible to write the purport to the law? Some kind of another lawyer who is qualified. प्रभु जी बता रहे हैं ये जो परपट जो कि अनुवाद है बिल्कुल बेकार के हैं, क्योंकि प्रभु जी इसके बाद उदाहरण देते हैं जिस प्रकार एक व्यक्ति जो लॉ की तैयारी कर रहा है तो वो लॉ के बारे में पढ़ता है तो वो उनकी किताबें ही पढ़ेगा जिसने लॉ के बारे में पहले से पढ़ लिया हो या फिर वो लॉ प्रैक्टिस कर रहा हो। And if one is qualified as a lawyer, he can write proper purports to Constitution of India, Constitution of Russia, and so on. Likely you have such editions of Constitution where not only Constitution is there, but some kind of explanation to each and every article, right? You have such editions. Yeah, you have. Translate. तो प्रभु जी बता रहे हैं जिस प्रकार जो लॉयर्स होते हैं जिन्होंने लॉ पढ़ लिया होता है तो वो ट्रांसलेशन दे सकते हैं जो कि क्वालिफाइड है, ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में और अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में, जो कि एक सही चीज़ है। But at the same time, there are people who are absolutely illiterate in terms of law. They don't know what law is, and they have their own ideas regarding this. So if someone will allow them to write purports to Constitution of India, what kind of book we will have? प्रभु जी बता रहे हैं जो अज्ञानी लोग हैं जिन्होंने लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो इस बारे में अपनी टिप्पणी करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की किताब होगी जिनकी इस बारे में उनकी टिप्पणी होगी। So Krishna, he says in 4th chapter, Paritranaya Sudunam Vinashaya Chadushkritam Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge. Dharma Samsthapanarthaya means I myself, I come to this world in order to re-establish religious principles. प्रभु जी बता रहे हैं कि पहले अध्याय में ये बताया गया है कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं तब धर्म बचाने के लिए आता हूँ, इस धरती पे आता हूँ। Religious principles or religious laws, how to live, what works in this world, what doesn't work, how everything is functioning. प्रभु जी बता रहे हैं, ये बताने आता हूँ कि जो रिलीजियस लॉज है, जो हमारे धार्मिक लॉ है, वो किस प्रकार सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इस बारे में बताने आता हूँ। And in this atmosphere of nescience, atmosphere of materialistic atmosphere of nescience, there is always inclination to forget this spiritual knowledge. प्रभु जी बता रहे हैं जो हमारा भौतिक जगत है उसमें एक स्वाभाविक चीज होती है कि वो ये जो हमारी नॉलेज है उसको भूलने लगता है, जो ये ज्ञान है। There is always this inclination. That's why Supreme Lord, he has to visit material world again and again, or he has to send his representative to remind what Bhagavad Gita is about, what Srimad Bhagavatam is about. प्रभु जी बता रहे हैं कि स्वाभाविकता रूप से हम जो भूल जाते हैं भगवान के ज्ञान को, तो भगवान को बार बार आना पड़ता है या फिर अपने अनुयायी को भेजना पड़ता है इस बारे में बताने के लिए कि ज्ञान क्या है। And the only qualification which is needed, minimum qualification, is to accept that maybe the author of Bhagavad Gita, maybe he is God, maybe he is Supreme Personality of Godhead. We are going to open this book to read, and in order to make it clear, is he Supreme Lord or not? But we don't reject this idea that he is Supreme. प्रभु जी बता रहे हैं सबसे छोटी क्वालिफिकेशन भगवत गीता को पढ़ने के लिए यही है कि हमें मानना कि हमसे जो सुप्रीम है, जो सबसे परम पूज्य परमेश्वर भगवान ही है, चाहे वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट हम इस बात को मना नहीं करेंगे कि वो नहीं है और ना इस बात को मान रहे हैं कि है,
हम सोच रहे हैं कि Because otherwise our reading of Bhagavad Gita will be useless without this proper attitude. तो इस एटीट्यूड के बिना भगवत गीता को पढ़ना कोई किसी काम का नहीं। So the attitude and the approach and the process of accepting Krishna's instructions is very simple. It was described. We already have read this. It is described in the purport to the second verse of the 10th chapter, that Krishna, he just gives knowledge of who he is, and we should just listen and read. प्रभु जी बता रहे हैं कि जो एटीट्यूड और क्या भाव होना चाहिए वो अभी हमने 10.2 के श्लोक में हमने देखा और उसी बारे में प्रभु जी ने बताया। Okay, so some points are mentioned here in the third verse, for example, verse number 3. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only undiluted among men is freed from all sins. जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरित और समस्त पापों से मुक्त होता है। So here these qualities of Supreme are described, that he is unborn, means he has no cause, he himself is cause of all causes, he is beginningless, and he Supreme Lord of all the worlds, means everything is controlled by him. प्रभु जी बता रहे हैं श्लोक में क्वालिटीज के बारे में बताया गया है जो कि अजन्म अनादि और समस्त लोगों के स्वामी ऐसा करके बताया गया है। Okay, so now we are going further. We have verse number 10.8. It is very famous verse, and when devotees they do book distribution, and when they distribute Bhagavad Gita as it is, they can open this place, this verse 10.8, in order to prove that Krishna is Supreme Personality of Godhead. प्रभु जी बता रहे हैं जो 10.8वां श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे भक्तगण हैं जब किताब वितरण करते हैं तो वो ज्यादातर इसी श्लोक को कोट करते हैं, इसी श्लोक को बताया करते हैं। And actually this verse proves that not Brahma, not Shiva, not Ganesh, not Durga, but Krishna is Supreme Personality of Godhead. तो प्रभु जी बता रहे हैं इस श्लोक में हमें पता लगता है कि ब्रह्मा, गणेश, बाकी आदि देवी देवताएं सुप्रीम नहीं है, सबसे परम नहीं है, बट कृष्ण सबसे ऊपर है। Aham sarvasya prabhavo, matah sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samanvitaha. So again, this verses from 10.8 till 10.11, it is essence of Bhagavad Gita. It is about relationships between Krishna and his devotees. So, translate. प्रभु जी बता रहे हैं ये रिलेशनशिप जो हमारी रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, उसके बारे में इसको बताते हैं। So even in the very first verse from this section 10.8, it is written, the wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So it is already about relationships. It is about relationships. What is the difficulty to find the verse? जो मेरे इस ईश्वर तथा योग से पूर्ण आश्वस्त है वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। You've read the translation, right? Okay, very good. So here it is written, I am the source of all spiritual and material worlds. And if someone will open Bhagavad Gita and if he will read this verse from the point of view that Krishna is ordinary human being, he will come to the conclusion that the author's self-esteem is too high. मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में ही अद्भुत है। Don't read. You translate what I'm told. It is not from book. It is not from book. I'm saying that if someone will open and will read this, I'm the source of all spiritual and material worlds, and if he will read it from the point of view
that Bhagavad Gita was told not by the Supreme Personality of Godhead, but by ordinary human being, then reader will come to the conclusion that the author's self-esteem is too high. प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर अपनी आध्यात्मिक चेतना से भक्त अगर इसको पढ़ेगा तो वो ये समझ पाएगा कि जो ये ऑथर है इस जो किताब के, उनकी सेल्फ स्टीम, जो उनकी खुद की प्रतिष्ठा है, काफ़ी ऊंची है. And actually, we had few cases when book distribution was going on, and when devotees were offering Bhagavad Gita to people on the streets, and that person to whom this book was given, he randomly was opening this particular page and was reading this particular verse 10.8. प्रभु जी उदाहरण बता रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि जो डिवोटीज है उनको जब किताब वितरण करा जा रहा था तो उन्होंने किताब खोली और यही श्लोक खोला. And few times the reaction was exactly like this. Self-esteem of the author is too high. प्रभु जी बता रहे हैं जो रिएक्शन था यही था कि जो आत्मसम्मान है ऑथर का काफी ऊंचा है. So you see, if someone opens Bhagavad Gita without accepting that Krishna is Supreme Personality of Godhead, he cannot get the message of Bhagavad Gita from Bhagavad Gita. प्रभु जी बता रहे हैं इसी तरह से हम जो कृष्ण का मैसेज है उसी को हम पहचान सकते हैं जो भगवद गीता में दिया गया है. So Bhagavad Gita is given as it is. You see this title on the book, Bhagavad Gita as it is. It is given without any distortion, but it also should be accepted as it is. It also depends on our attitude. How do we read it? प्रभु जी बता रहे हैं जो यथारूप भगवद गीता है वो हमें यथारूप जैसी है वैसी ही दी जा रही है. तो हमारा भी यही होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भी इसे इसी प्रकार, जिस प्रकार से दी गई है उसी तरीके से अपने जीवन में उतारें. Matah sarvam pravartate. It means everything emanates from me. प्रभु जी बता रहे हैं, जो श्लोक बता रहे हैं, जो सभी चीजें मुझसे निकलती है. It means we also emanated from Krishna. We are parts and parcels of Krishna. इसका मतलब है हम भी कृष्ण से ही निकले हैं और हम भी कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं. So, if to accept this knowledge as it is, with full faith, then the result is that one becomes ready and eager to serve the Supreme Master. अगर हम पूर्ण समर्पित होकर अपने जीवन में उतारेंगे तो हम ये मानेंगे कि हम इच्छुक हैं कृष्ण की भक्ति में आने के लिए. It is called religious life in knowledge. इसे कहते हैं जो रिलीजियस लाइफ इन नॉलेज, अर्थात जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी बुद्धि. We are not asking our followers, ISKCON followers, for blind faith. We are not asking for that. हम ISKCON के भक्तगणों से हम पे अंधा विश्वास नहीं करने को कह रहे हैं. Just you just believe. You don't understand it, but you just believe. प्रभु जी कह रहे हैं आप माने ना माने बट आप थोड़ा हम पे विश्वास रखिए. Means this faith, blind faith, is recommended to be as the replacement for lacking of knowledge. There is no knowledge, so we're trying to replace this lacking of knowledge by blind faith, but it is not our way. प्रभु जी कह रहे हैं कि जो ब्लाइंड फेथ है, जो अंधा ज्ञान है, उसको हम अपने जो हमारा बिलीफ है उससे पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं. But when one understands that Supreme Personality of Godhead is great and how great He is, then that person becomes motivated to serve Supreme Personality of Godhead. जब भक्त जान जाता है कि सुप्रीम जो सबसे परम ईश्वर कृष्ण ही है तो वो बहुत इच्छुक और ईगर हो जाता है उनकी भक्ति या उनको सर्व करने के लिए. This motivation comes from knowledge. तो ये जो मोटिवेशन है जो हम आती है ये हमें ज्ञान से ही आती है. It is like, for example, some people, they are searching where can I invest my money, where I can get profit, and when they know where they can get profit, then automatically they become motivated to invest money there. प्रभु जी बता रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति को
पता चल जाता है कि उसे अपने पैसे कहाँ पे लगाने हैं, तो उसका जो मोटिवेशन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। So the spiritual life is also about to invest, where we can invest our time, our energy, our heart, you know. तो जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन है, वो भी इसी प्रकार का है, जहाँ पे हम अपना जीवन और समय कहाँ पर लगा सकते हैं। And this desire to dedicate one's life to something great, this desire, usually human beings, they have these desires, सो this अब desire. जो हमारी इच्छा है कि हम अपनी समय और अपनी हमारा जीवन कहाँ लगा सकते हैं, ये सदापूर्ण मनुष्य में अपने आप ही होती है। And many people already have been cheated and are cheated and will be cheated by different false philosophies, ideologies, and so on. प्रभु जी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसी कारण ठगे गए हैं, जो कि झूठी फिलॉसफी और झूठी आइडियोलॉजी थी लोगों की, और ठगे हैं, ठगे जाएंगे और ठगेंगे भी। So we have this Bhagavad Gita as it is, where Krishna selflessly, out of compassion to conditioned souls, he explains everything as it is. तो इसमें कृष्ण भगवान है, वो जो पतित आत्माएं हैं उनको इस ज्ञान के बारे में बताते हैं। Those who promote different ideologies or philosophies of this world, they usually materially motivated. जो अलग धारणाएं और अलग आइडियोलॉजीज फैलाते हैं, वो भौतिक जगत से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। They want something from their followers for themselves. वो अपने लिए अपने अनुयायी ढूंढ रहे होते हैं। They, Followers। they want name, fame, and all this stuff. उनको नाम, प्रतिष्ठा और धन ज़्यादा चाहिए होता है। But Krishna, he gave Bhagavad Gita in the presence of both armies, Pandavas and Kauravas, means he wasn't partial to anyone. प्रभु जी बता रहे हैं, जो भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है, वो जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों आर्मी है, पांडु और कुरु की, उनके बीच में दिया है। And if we are speaking about those who promote some materialistic philosophies, usually they are lacking something and they want to get it from their followers. But Krishna doesn't lack anything. प्रभु जी बता रहे हैं, जो अपनी खुद की धारणा और फिलॉसफी आगे बताते हैं, तो वो अपने अनुयायी से कुछ ना कुछ चाहते हैं, बट जो कृष्ण भगवान ने जो भगवद गीता में बताया है, तो वो अपने भक्तों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। He doesn't lack anything because he is the source of everything. उनको इसीलिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उन्हीं से सब चीज़ निकल रही है, वो सोर्स है हर चीज़। And he is our well-wisher, he is Supreme Father. और वो हमारे वेल विशर है, वो हमारा अच्छा सोचते हैं हमेशा, और वही हमारे परम पिता है। He is well-wisher of everyone, especially of his devotees. He is Bhaktavatsala for his devotees. वो भक्त वत्सला है, अर्थात वो अपने भक्तों का अच्छा सोचते हैं। So, if one understands this position of Krishna, then he becomes motivated to be engaged in devotional service. तो जो अगर भगवद गीता को समझ जाता है, वो इच्छुक बन जाता है कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के लिए। But it starts from knowledge who Krishna is. Without knowledge, it is difficult to remain motivated. बट ये सब ज्ञान से शुरू होता है कि कृष्ण कौन है। We're going to the next verse number 10.9. Madchita madgata prana bodhayantah parasparam kathayantas chamam nityam tushyanti charamanticha. So it is about activities of Krishna's pure devotees. प्रभु जी बता रहे हैं, हम अगले श्लोक पे जा रहे हैं 10.9 पे, और इसमें वो बता रहे हैं मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी क्या एक्टिविटी होती है। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। So we have our body, we have our speech, and we have mind. प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारे पास हमारा बुद्धि, स्पीच और हमारा
Body, then speech, then mind. प्रभु जी बता रहे हैं हमारे पास हमारी शरीर, हमारा हमारी जो जुबान है और हमारा दिमाग, बुद्धि अर्थात है हमारे पास। And we can gradually engage all this in devotional service. Everything starts from body. We can do something physically for Krishna. प्रभु जी बता रहे हैं हर चीज हमारे शरीर से ही होती है, तो हम चाहे तो कृष्ण के लिए अपनी जो शरीर है उससे कुछ कर सकते हैं। Very simple things. Like for example, we have a cook here, and someone can approach and he can tell, "Can I help you to cut the vegetables?" For example. प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं, हमारे पास देश में बावर्ची है जिसकी हम सहायता कर सकते हैं कि हम आपकी कुछ सहायता कर दें, जो कि कृष्ण की सर्विस है। Did you tell something about cook? Okay, good. Or someone can go to ISKCON temple and he also can ask, what can I do for Krishna here? Can I take some service, some seva? प्रभु जी बता रहे हैं, या फिर हम इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं और कुछ जो सेवा है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि मैं किस सहायता कर सकता हूँ और क्या क्या मैं सेवा टेम्पल में कर सकता हूँ। Also, then the next point, one can engage his speech. He can speak about Krishna. But before one starts to speak about Krishna, one has to get some knowledge about Krishna. Otherwise, what do you use to speak? प्रभु जी दूसरी सेवा के बारे में बता रहे हैं कि हम जो अपनी स्पीच जो कि हमारी जुबान है उसे हम कृष्ण के बारे में बता सकते हैं और फिर That's why we have these classes, Bhagavad Gita classes, Srimad Bhagavatam classes, different programs where we discuss Krishna Katha. इसलिए हमारे जो है अलग-अलग भगवद गीता क्लासेस होती है जिसमें हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। And one can engage his speech in devotional service by discussing these spiritual subject matters and also by chanting holy names of Supreme Lord. प्रभु जी बता रहे हैं, और दूसरा हम अपनी जो जुबान है उसको हम भगवान की सेवा में भगवान के गुणगान और भगवान के नाम जप करके सेवा में लगा सकते हैं। One can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In that way we become united. तो इसी प्रकार हम एक साथ बन जाते हैं। In that way we become united. Did you tell this, Ned? No? You told? Yes. We become united. On physical level, on national level, or whatever, we can be not so much united, but the spiritual activities makes us united. हम शारीरिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एकगत नहीं हो सकते, बट हम इस प्रकार से हो सकते हैं। And it gives satisfaction and pleasure to the heart. और ये हमें ये पूर्ण रूप से खुशी देता है, हमारे हृदय को खुशी देता है। Because each and every living entity, each and every human being wants this Satchitananda, and it doesn't depend on nationality or citizenship. Any living entity wants Satchitananda. सभी मनुष्य को सच्चिद आनंद, हर समय खुश रहना पसंद है, और वो उसकी नेशनैलिटी, उसका क्या राष्ट्र है और क्या उसकी आइडेंटिटी है, उस पर निर्भर नहीं करता है। So we can engage our speech in devotional service, and then mind goes after all this, because not so easy to involve mind. This mind is inclined to think about different rubbish. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो तीसरी चीज है वो मन है, और मन को काबू करना और मन को एक स्थिर लगाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफी रबिश, मतलब कूड़े कचरे या फिर जो चीज अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है। But when we chant holy names of Krishna, our consciousness becomes purified, and then it becomes easier to think about Krishna. बट जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी जो चेतना होती है और मन होता है वो शुद्ध हो जाता है, और हमारे लिए ये सब करना आसान हो जाता है। So first body, then speech, and then mind. So पहले बुद्धि आती है, पहले हमारा शरीर आता है, फिर हमारी जुबान आती है, और फिर हमारा मन आता है। And of course, if we are physically engaged in devotional service, if we have some
commitments, some particular seva to do, then naturally it is easy to think about Krishna in the terms to think about our seva, about our commitments. अगर हम शारीरिक रूप से सेवा में हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि हम अपने मन को भी कृष्ण के ऊपर एकाग्रित कर सकें. And here in this verse 10.9, it is written that their lives are fully devoted to Krishna's service. तो 10.9 श्लोक में बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो जीवन है कृष्ण को पूर्ण समर्पित है. How to become devoted to Krishna's service? Very simple. One should get instructions from spiritual master, and then one should accept this. One should accept these instructions as his life and soul. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए जैसे कि वो हमारी लाइफ और सोल हो, मतलब हृदय से पूर्ण रूप से उस चीज को और उस कार्य को करना चाहिए. We read in this verse that pure devotees are dedicated to Krishna's service, but they are so wonderful not just by their own efforts, but by mercy of their spiritual masters. जो प्रभु जी बता रहे हैं जो प्योर डिवोटी होते हैं वो भगवान की जो सर्विस है इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि उनके गुरु का आशीर्वाद होता है. It is the law of spiritual life. यही जो लॉ है, यही जो नियम है हमारे आध्यात्मिक जीवन का. And Srila Prabhupada also was instructed by his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati to preach Krishna consciousness outside India. और इसी कारण जो श्रील प्रभुपाद है उनको उनके गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप बाहर जाके प्रचार करें. So in that way, since 1922, Srila Prabhupada already he has got mission of his life. So इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी को 1922 में ये अपना जीवन का मिशन मिल गया था. Of course, it depends on our attitude to the instructions that we get from spiritual master. Because some people they can say that okay, he told me something, but there are many people, and each and every person tells something. So if there is one approach when the words of spiritual master and the words of other living entities are accepted on equal level, and it is not good for spiritual life. प्रभु जी बता रहे हैं हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें ये अच्छा नहीं है कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो बताए और उसका पालन ना करें, बाकी जो और लोग बताए और वो करें. But again, if spiritual master is accepted as Krishna's representative, then his instructions can be accepted as life and soul. अगर हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस का पालन करें जो लाइफ एंड सोल मान के तो हम प्राप्त कर सकते हैं. It can be accepted as one's mission of life. और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर मान सकते हैं. And in such way, this desire that human being can have, this desire to dedicate his life to something great, this desire can be fulfilled. और जो इच्छा कि हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और ग्रेट बना सकते हैं, ये पूर्ण रूप से पूर्ण हो सकता है. Means pure devotee he doesn't consider himself to be great. He just considers the mission, the activities to which he dedicates his life to be great. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को पूर्ण और सबसे अच्छा नहीं समझते, बल्कि उनका जो मिशन होता है जो वो कार्य कर रहे होते हैं उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. That's why externally he can be perceived as a great person, but internally he doesn't consider himself to be great. Externally, for others, he is great or she is great, but internally they consider themselves just to be humble servants of their spiritual masters and Supreme Lord. इसलिए बाहरी रूप से वो बहुत अच्छे और बड़े दिख सकते हैं, बट अंदर से वो अपने आप को सबसे छोटा और भगवान का दास ही मानते हैं. They derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me, Krishna says. It is translation of this same verse. Please translate. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि वो बहुत खुश हो जाते हैं जब वो मेरे बारे में बातें करते हैं और
मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। So, when we practice devotional service, when we follow this path of devotional service, we should know what is the source of our satisfaction. And for some people, it depends on our nature also. Some people become satisfied and peaceful when they when they took prasadam, for example, and it is sufficient for them. सो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये भक्त से भक्त डिपेंड करता है। इस प्रकार कई भक्त बहुत ही खुश हो जाते हैं जब प्रसादम मिलता है। And some people become satisfied by reading few pages from Srila Prabhupada's books. और कुछ भक्त खुश हो जाते हैं कि वो थोड़े ही कुछ पन्ने भगवद गीता या श्रील प्रभुपाद की कोई भी किताबों के पढ़ते हैं। And some people are become satisfied and peaceful by taking part in kirtana. और कुछ भक्त इसी प्रकार खुश हो जाते हैं और जब वो कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। So if we are in anxiety, we should know what works, what really works in our case. So अगर हम खुश है तो हमें पता होना चाहिए हमारे जो केस है उसमें क्या सही है। Like for example, when Srila Prabhupada was going from India to United States by Jaladuta, he was reading, and when he was living in United States, the first year, especially the first year of his being in United States, was not easy for him. So प्रभु जी बता रहे हैं जो प्रभुपाद जी जब जलदूत यानी शिप से जब यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे थे तो उनके लिए वहाँ रहना पहला जो था महीना वो बहुत मुश्किल और कठिन था। It was not easy for him, so he was reading Chaitanya Charitamrita. He had this book where life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu are described. He was reading this book. So वो चैतन्य चरितामृत जो आपके पीछे है बिल्कुल वो आप देख सकते हैं वो पढ़ रहे थे और उसका जो चैप्टर है चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे थे। And he was getting satisfaction and relief by reading these books when hard times came. He was reading these books. जब उन पे कठिनाई आई तो उन परिस्थितियों में वो बहुत खुश होते थे और चैतन्य चरितामृत को पढ़कर। Because you see, if someone is in distress or in anxiety, he can read. If one is materialistic person, he can read some fiction or he can watch TV and he can feel some kind of illusory relief. But it is not real relief. It is just some kind of distraction. He becomes distracted from his own problems, but problems are not solved. प्रभु जी बता रहे हैं जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो अलग-अलग तरीके की स्टोरियाँ पढ़ता है, अलग-अलग किताबें पढ़ता है, बट उससे वो अपनी प्रॉब्लम्स में खुद ही और उलझ जाता है। उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। But when we read Srila Prabhupada's books in hard times, yeah, it solves problems also because we understand who Krishna is, and it makes us not only peaceful, but it also gives us perspective in our life, what to do, what for, what is the purpose of my life, and all these things. बट जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं और हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारा जो मन होता है वो स्थिर हो जाता है काफी। Srila Prabhupada was reading Sri Chaitanya Charitamrita, and in that way he was meditating on Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose mission he was serving. So प्रभु जी बता रहे हैं जब कठिन समय आया था तो वो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे और अपने लाइफ के लक्ष्य को पहचान रहे थे और इसी प्रकार उन्होंने निकाला। Srila Prabhupada, he was following Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's order to preach Krishna consciousness outside India, but actually it is also Sri Chaitanya Mahaprabhu's desire. So he was meditating on Sri Chaitanya Mahaprabhu, on this desire. It means he was meditating on something exalted, and on something which has connection with his life. So प्रभु जी बता रहे हैं कि वो अपने जब गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे थे बाहर देश में जाकर प्रचार करने के लिए, तो जब वो मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो वो एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु से ही जुड़े हुए थे, उनके मिशन से और उनसे ही जुड़े हुए थे।
It has connection with his life and it is exalted. But when materialistic person, in order to get rid from anxiety, when he reads fiction or watches TV, he meditates on something which is not exalted, which is quite inferior, and he meditates on the things that has nothing common with his life. So प्रभु जी बता रहे हैं जब भौतिक दुनिया में लोग अपनी परेशानियों में जब चीज़ों को पढ़ते हैं, भौतिक चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उनसे उनको पर्पस नहीं मिलता है और वो कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, तो यही रीज़न है इसका। It means waste of time. इसका मतलब हमारा हम समय नष्ट कर रहे हैं। And when materialistic people, when they see that other people are trying to learn, are trying to study sacred scriptures, they also can come to the conclusion that you are wasting your time. It doesn't have anything common with your life, but actually it has. प्रभु जी बता रहे हैं कि जब भौतिकवादी लोग चीज़ को पढ़ते हैं और आध्यात्मिक लोग उनको देखते हैं तो वो समझ पाते हैं कि उनका इस सबसे कोई नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उनका। It has connection, and even if we will analyze this verse, if we will analyze this verse 10.9, and if we will say that this verse has nothing common with me because I'm not a pure devotee. Anyway, we have one argument regarding this. So प्रभु जी बता रहे हैं कि जो 10.9 श्लोक है उसमें एक आर्गुमेंट है कि ये प्योर डिवोटीज के लिए तो कहा ही नहीं गया है, शुद्ध भक्तों के लिए तो कहा ही नहीं गया है। And the argument is that, okay, maybe you are not a pure devotee, that's okay, but you can serve to pure devotees. आर्गुमेंट ये है कि आप शुद्ध भक्त तो नहीं हो सकते, बट आप उनकी सेवा, उनको सर्व कर सकते हैं। We have Srila Prabhupada's followers in ISKCON who are pure devotees, and Srila Prabhupada is also pure devotee, so we can just dedicate our service in ISKCON to them. It is just the question of our meditation. How do we meditate when we do our seva? प्रभु जी बता रहे हैं कि जो ISKCON संस्था है और उनके जो प्रभुपाद जी और उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो कि उनके भक्तगण हैं, वो सब प्योर डिवोटीज है और उनकी सेवा करके हम मेडिटेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। So anyway, these verses 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, it is about relationships between Krishna and his bhaktas. So 10.8, 9, 10 and 11 में वो कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताते हैं। It is very interesting. The first two verses are about what bhaktas do. They, verse number 10.8, they understand that Krishna is supreme, that he is master of everything, and it makes them motivated to serve Krishna. So श्लोक 10.8 में बताते हैं कि कृष्णा ही सब चीज़ों के सोर्स है, उन्हीं से सब चीज़ें निकल रही है और इसी प्रकार हम उनको सर्व कर सकते हैं। They are motivated, and then the next verse 10.9, they become absorbed in devotional service. तो 10.8 में वो मोटिवेट हो जाते हैं और 10.9 में वो भगवान की सेवा करने के लिए fully absorbed, मतलब उसमें तत्पर हो जाते हैं। And the next two verses are about Krishna's reciprocation, how Krishna reciprocates to these efforts. और जो अगले दो श्लोक है वो किस प्रकार कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं अपनी चीज़ों को, उस बारे में बताया गया है। Where it is? It is here. Tesham satata yuktanam, bhajatam pritipurvakam, dadami buddhi yogam tam, yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उनमें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। And here you can see on the screen this picture. That person is asking, "Oh Lord, please talk to me," and Supreme Lord gives him Bhagavad Gita. So आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एक आदमी है वो भगवान से बोल रहा है कि प्लीज आप मुझसे बात करिए और भगवान उसे भगवत गीता दे रहे हैं। So it is our way to interact with Supreme. He already told about himself
many things in Bhagavad Gita. सो यही तरीका है हमारा भगवान से बात करने का, और और ये तरीका उन्होंने बता रखा है भगवद गीता के माध्यम से। Just accept it as it was written in purport. It is our process of acquiring knowledge. We just accept it as it is with purports. तो ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है कि हमें भगवद गीता को यथारूप एज इट इज ही अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। So Krishna gives understanding, or better to say, he gives intelligence. Dadami buddhi yogam tam. Buddhi means intelligence. सो कृष्ण ही हमें बुद्धि और सोचने की, समझने और सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं। He gives intelligence, and there are two conditions to get this intelligence. It is written here. One should be engaged constantly. The first condition. The second is that one should serve with love. तो प्रभु जी बता रहे हैं इंटेलिजेंस लेने के भी दो तरीके मतलब मिलती है, उन्हीं लोगों को मिलती है जो कृष्ण में निरंतर सेवा करते रहते हैं, और सेवा किस भाव से, प्रेम पूर्वक भाव से करते हैं। Two conditions, and then Krishna reciprocates. It means that you get what we call in ISKCON, we get realizations. So उसी कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब देते हैं, जो हम ISKCON में सुनते हैं, हमारे आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन जो होती है हमारी। He is situated in everyone's heart. वो सभी के हृदय में है, and he knows everything. और उनको सभी कुछ पता है। You cannot hide anything from आप Krishna. उनसे कुछ छुपा नहीं सकते हैं। Don't try to cheat Krishna. और कृष्ण से चीटिंग मत करिए, उनसे कुछ Anyway, it is impossible to cheat Krishna. ये पूर्ण रूप से पॉसिबल नहीं है कि आप उनसे कुछ चीटिंग कर सकें। Don't try to cheat him. He knows everything, even much more than you know about yourself. आप उनसे चीटिंग मत करिए क्योंकि उनको सब पता है। So he is situated in everyone's heart. We follow this process of Krishna Katha, of Nama Bhajan, and he cleanses our hearts. तो ये जो प्रोसेस है कि हम कृष्ण को भजते हैं, और ये जो प्रोसेस है, इसी से हमारा हार्ट है वो प्यूरिफाई होता है। And he gives these realizations, this understanding of what Bhakti Yoga is. और जो रियलाइजेशन है और जो सोचने और समझने की क्षमता है, वो बताते हैं कि भक्ति योगा क्या है। Means we get this knowledge from external, from internal. Externally we read books and we accept some conceptions, some knowledge and so on. But this knowledge becomes life knowledge if we practice and if Krishna helps us from within. प्रभु जी बता रहे हैं भारी और अंदरूनी रूप से हम प्रयास करते हैं, भारी रूप से हम किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और वो कृष्ण हमारी समझने में मदद करते हैं। If one just reads books but doesn't practice, Hare Krishna. If one reads books but doesn't practice, then this philosophy remains dry philosophy. It doesn't transform one's life. प्रभु जी बता रहे हैं अगर कोई इस फिलॉसफी को पढ़ता है पर अपने जीवन में नहीं उतारता है तो ड्राई फिलॉसफी है, And it doesn't transform one's life. और ये किसी के जीवन को ट्रांसफॉर्म मतलब बदलता नहीं है। So again, verse 10, number 10, it is about service, it is about practical engagement. So जो ये वर्स है वो प्रैक्टिकल एंगेजमेंट, मतलब किस प्रकार आप भगवान की सेवा कर सकते हो। Because you see, Bhakti Yoga, Srila Prabhupada translated this word Bhakti as devotional service, means it is particular activity which can be done. तो श्रील प्रभुपाद ने जो भक्ति योगा शब्द है उसको एक एक्टिविटी बताया है जिसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। Because sometimes people, they translate this word bhakti as love for Godhead. Love means some kind of emotion, but it doesn't mention that something should be done practical. We just love. प्रभु जी बता रहे हैं जो भक्ति शब्द है उसको ज्यादातर लोग प्रेम से कर लेते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कोई नहीं देखता है कि उसके साथ क्या कर सकते हैं। So Srila Prabhupada, he explains this process. One should be engaged practically, one should dedicate his energy, time, mind to these activities, and by being engaged, heart becomes cleansed, and when heart becomes cleansed,
then this love for Godhead is manifested. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि किस प्रकार जब हम ये जब जो क्रियाएं बता रहे हैं वो सब करते हैं तो जो भगवान के प्रति प्रेम है वो मैनिफेस्ट हो जाता है. It is not that one can become sentimentally emotional and one can say, "Oh, these sentiments that I experience now, it is my love for Godhead." No, it is not so cheap. सो प्रभु जी बता रहे हैं कि कोई भावुक होकर बता सकता है कि ये कृष्ण प्रेम है, बट भगवान का जो ये इस प्रकार भावुक होकर प्रेम लेना कोई सस्ता नहीं है बहुत ज़्यादा कि किसी को प्राप्त हो जाएगा आसानी से. No, this love should be proved by dedication of time, efforts, mind, and all these things. और ये जो हमारा प्रेम है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भगवान के प्रति प्रूव करना पड़ेगा डेडिकेशन के थ्रू में. Like the same way, like relationships between husband and wife, it is cheap when husband tells to his wife, "I love you," but he is not about to do anything for her. तो ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार पति पत्नी के रिलेशनशिप को दर्शाता है. जिस प्रकार पति पत्नी से बोलता है कि तुमसे प्यार करता हूँ, बट उस प्यार को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करता है. Love is proved by actions. By actions. जो प्रेम है वो गतिविधि करके ही प्रूव करा जा सकता है. And if these actions are performed with love and constantly, call the person who is in charge of our sound system. कृपया करके उसको बुलाए जो कि इस साउंड सिस्टम का Who is in charge of our sound system? We have to do something with this. कौन है साउंड सिस्टम का इंचार्ज? Oh. कृपया करके उसको बुलाया जाए. Why he is working somewhere? He should be sitting here. So कहीं जा रखे हैं, उनको यहाँ होना है. so if these efforts are performed with love and constantly, then it is the proof that Supreme Lord should reciprocate, and actually he reciprocates. तो बता रहे हैं कि अगर जो डिवोटी है कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति करेगा प्रेम पूर्वक के साथ, तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं. Okay, and we go to the next verse 10.11. Tesham evanu karpardham aham agyana jam tamach nashayam yatma bhavastho gyana dipena vasvata. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. It is how he reciprocates. अब हम अगले श्लोक की तरफ चलेंगे 10.11 10.11 जो कि है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ. So this verse is 10.10 and 10.11. In 10.10 it is written what he gives, and in verse 10.11 it is written what he takes. So thus 10.10 और 10.11 में ये है, और 10.10 में वो बताते हैं कि क्या भगवान लेते हैं, और 10.11 में बताते हैं क्या देते हैं. He gives intelligence and he removes obstacles, means he removes this nescience which is an obstacle in devotional life. So जो हमें बुद्धि देते हैं और हमारे जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं हमारे जीवन में वो हमसे ले लेते हैं, जो कि 10.11 में बताते हैं. Huh? So what is expected? It is expected that we should be engaged in devotional service constantly and with love, and then we can expect his reciprocation, which is described in the verse 10.10 and 10.11. तो हमें कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, और इसी प्रकार वो हमें रेसिप्रोकेट हमें देते हैं, जो कि 10.10 और हम क्या लेते हैं और 10.11 में बताया गया है. We are going further. हम आगे जा रहे हैं. Yeah. Okay, what is written here? Life lesson. Purity is the force, books are the basis. Basically, it is what we were speaking about. Yeah, he is in our hearts and he purifies our hearts. He removes ignorance from our hearts if we are active in devotional service. अगर हम डिवोशनल सर्विस में आध्यात्मिक जीवन में अपने
अगर हम एक्टिव रहते हैं तो हमसे वो अज्ञानता ले लेते हैं. Okay, going further. Three steps to progress Sambandha Abhideya Prayojana. Sambandha Abhideya Prayojana. Okay, it very interesting, very interesting. Well, looks like we will not be able to cover the whole presentation for today. Is it okay or not? Yeah, other people can cover. Anyway, we will try to cover as much as possible. But yeah. So these three terms, do you know these three terms, Sambandha, Abhideya and Prayojana? Do you know or not? Translate. तो आपको ये फीचर्स आपको पता है नहीं जो स्क्रीन पे है आप. Yes or no? हाँ या ना में जवाब दीजिए. Okay, let's do like this. Who knows, please raise your hand. You know. And you know. नो मतलब अगर नहीं पता है आप. Okay, let's try again. नो मतलब Who knows? Who knows these three things? Prabhuji knows, right? And that's all. No one knows, right? No one knows what Sambandha, Abhideya, and Prayojana means. Okay. So you see, any philosophy can be divided in these three parts: Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Sambandha means how everything is working, the description of the reality by which we are surrounded. प्रभु जी बताए कोई भी फिलॉसफी तीन भाग में बट सकती है: संबंध, अभिदया और प्रयोजना. संबंध में प्रभु जी बता रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है उसके बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस के बारे में. Okay. So Sambandha means we are surrounded by reality, and Sambandha answers on the questions what it is all about, where I am. So उसके बारे में बताया जाता है कि हमारी जो सराउंडिंग और हमारी जो रियलिटी होती है उसके बारे में बताया जाता है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, जो भौतिक जगत है उसके बारे में रेफर कर रहे हैं. And then the next question, philosophical questions. By the way, who are studying philosophy between you? Who are philosophers? प्रभु जी पूछ रहे हैं आप सब में से कौन कौन फिलोसफी स्टडी कर रहा है, फिलोसफर्स कौन है? No philosophers. Political science. Political science is also good. Okay. This Bhagavad Gita, as it is related to politics and diplomacy also, because they were trying to avoid this battle, but they could not because it is Krishna's plan. तो जो भगवत गीता है वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से ही रिलेटेड है. Why you translate the whole thing? Translated. Are you sure? Yes, yes. Okay, Hare Krishna. So Sambandha means what kind of reality I'm surrounded and where am I? And Prayojana means goal of life, means what should I be hankering for? What should I try to achieve being surrounded by this reality? What should I try to achieve in these circumstances where I am? It is Prayojana. प्रभु जी नेक्स्ट चीज के बारे में बता रहे हैं जो प्रयोजना है, जिसका अर्थात गोल है कि किस चीज के लिए मैं हंकर करूं, किस चीज के लिए मैं परेशान हूं, कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरी लाइफ में क्या करना है. What should be my goal? What should I be trying to achieve? And Abhideya means process, means what should I do in order to achieve this goal? तो जो नेक्स्ट है अभी, Don't play, just translate. जो नेक्स्ट है वो अभिदया है, प्रोसेस है, अर्थात कि इस चीज को पाने का क्या प्रोसेस है, मतलब इस चीज को कैसे हम पा सकते हैं. Abhideya means process. So you see, any philosophy or any religious teachings can be divided in these three parts: Christianity, Muslim religion, whatever. Hare Krishna religion can be divided in these three parts. Where am I? What kind of reality is around me? What should I try to achieve and how to achieve it? प्रभु जी बता रहे हैं कोई भी फिलॉसफी या फिर रिलीजन तीन चीज़ों में बढ़ सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन हो, इस्लाम रिलीजन हो या हरे कृष्णा रिलीजन हो, कि मैं कहाँ हूँ और मैं उस चीज़ को कैसे पा सकता हूँ और क्या पाना है. Okay, so let's see what is written here.
Sambandha, knows one's relationship with Krishna and the universe. So these verses from 8 to 11, they give knowledge regarding Sambandha, Abhidaya, Prayojana. Means the whole Bhagavad Gita is situated in these 4 verses in very, very short form. प्रभु जी बता रहे हैं जो 10.8 से 11 है, जो 3 प्रोसेस हमने अभी देखे, वो पूरी भगवत गीता को उसी उसमें बताया गया है. And these children are from Russia because you see this girl takes Bhagavad Gita, this Russian edition, Bhagavad Gita, как она есть. तो आप देख सकते हैं जो 2 लड़कियां हैं वो रशिया से है, क्योंकि उनके हाथ में जो भगवत गीता है वो रशियन एडिशन की है. Bhagavad Gita, как она есть. как она есть. Very good. So, so in these verses we can get to know that Krishna is the source of everything that exists. He's source of knowledge, and he destroys all ignorance. So इसमें हम जान सकते हैं कि कृष्ण है वो सभी चीजों के करता धरता है, और वही सोर्स, मतलब उन्हीं से जितना भी ज्ञान है वही आ रहा है. So it is about Krishna's role in our life. So ये है कि कृष्ण हमारी जीवन में किस प्रकार दिखाता है. So when we are speaking about Sambandha contains answers on few questions. On few questions. Who am I? Who is Krishna? 4 questions. 4 questions. Who am I? Who is Krishna? What is this material world about, and how it is interrelated? So जो संबंधा है वो 4 क्वेश्चंस उसमें आंसर करे जाते हैं कि मैं कौन हूँ. सेकंड वन वाज Who am I? Who is Krishna? Then what is this material world about, and how everything is interrelated? मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, और ये मटेरियल वर्ल्ड से मेरा रिलेशन क्या है, और कैसे मटेरियल वर्ल्ड आपस में रिलेटेड है. So here in these verses it is written about Krishna, it is said about Krishna that he is source of knowledge and source of everything, and he destroys ignorance in our hearts. बताया है कि कृष्ण ही सब चीज़ों के सोर्स है, नॉलेज के और हर चीज़ के, और कैसे वो हमारे हृदय में जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, उसको नष्ट करते हैं. Then we go to the next slide, and here it is written about, okay, let's go here. Our goal is to develop love for Krishna, who is source of everything, and so on. So if this love is here, then one becomes protected, knowledgeable, and satisfied and blissful. It is written here. So प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रयोजना कि हम कैसे कृष्ण के लिए अपना प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं. So पहला प्रभु जी ने बताया कि हम ज्ञान अर्जित कर कर, दूसरा हम प्रोटेक्टेड रहकर, तीसरा जो पूर्ण अनुभूति होती है हमें कृष्ण के बारे में बात करके. So you see, this knowledge should motivate, right? तो ये हमें मोटिवेट करती है नहीं करती. This knowledge should motivate because everyone wants to be protected, and people are seeking for knowledge and for bliss, satisfaction. It is natural needs, natural desires. तो ये हमें मोटिवेट करती है क्योंकि हम बेसिक जो हमारी नीड्स हम प्रोटेक्ट हम जो हो रहे हैं उनके थ्रू, और बाकी चीज भी बताई जाती है. मोटिवेशन है हमारे लिए एक्चुअली. Okay, and regarding Abhidaya, what should one do? What should one do in order to develop, or better to say, to revive this love for Krishna? It is also described in these verses. So अभिदया मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो वो भी इन्हीं वर्ष में बताया गया है. Because you see, when it is written develop love for Krishna, actually it is not proper word develop, not to develop, but to awaken, because it is inside, it is in everyone's heart, but it is in sleeping mode. Like this laptop also can be in sleeping mode. So this love is in everyone's heart, but it is in sleeping mode. तो प्रभु जी बता रहे हैं जो डेवलप, जो बनाने शब्द यूज करा गया है कृष्ण प्रेम बनाना, वो गलत है, बल्कि हमें अवेकनिंग मतलब
उठाना है हमें, जो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, क्योंकि सभी के हृदय में है, बस उसको उठाना है। इस प्रकार लैपटॉप को एग्जांपल दिया, वो सो सकता है स्लीपिंग मोड में, इसलिए हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम है, बस उसको उठाना है। So the same way, how to revive or how to awaken this love for Krishna, it is also described in these verses that one should think of Krishna, surrender to Krishna, and devote his life to Krishna's service. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें अपने कृष्ण प्रेम को कैसे वापस से उजागरित करना है, और कैसे उसको जो छुप रखा है उसको उठाना है हमें, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। So what I can suggest, you can, likely you have your own copy of Bhagavad Gita, right? You have your own copies. आप सभी के पास अपनी कॉपी होगी भगवत गीता की। Yeah. So your your homework will be to read these particular verses. Of course, all other verses as well, but these particular verses you please try to read attentively. 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, and ask Supreme Lord Shri Krishna, please help me to understand these verses very nicely, because the essence of Bhagavad Gita is here. सो आपके पास आपकी जो कॉपी है उसमें आपका एक गृह कार्य रहेगा कि आप इन सब जो वर्ड्स पढ़ाए हैं उनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एसेंस है भगवत गीता का। And also you can find on YouTube, you can find some ISKCON classes on these 4 verses and listen and get some inspiration. तो इन 4 वर्सेस के लिए आप किसी यूट्यूब पे भी ISKCON वेरीफाइड चीज़ों को, सोर्स को आप सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। And in that way you will get deeper understanding of these 4 verses. इसी प्रकार से आप जो इन 4 वर्सेस के बारे में और गहराई से जान पाएंगे। Okay, we're going further. And in the verses from 10.12 to 19, it is said, tell me more, tell me more. Arjuna is asking Krishna to tell more. So 10.12 और 10.19 में अर्जुन कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं कि आप मुझे और बताइए, और बताइए। And then he will tell about his vibhutis or his opulences. और फिर उनको उनके ऐश्वर्य के बारे में बताया जाता है। The long list of these vibhutis is there, and we have no time to read it, right? जो उनकी लिस्ट है ऐश्वर्य और बाकी सब चीजों की, वो बहुत लंबी है, बट हमारे पास अभी समय नहीं। So likely these vibhutis, particular vibhutis, will be covered by another speaker, but we will read a little bit from this section, which is called "Tell Me More." जो विभूति बाकी है वो दूसरा कोई स्पीकर अगले सेशन में कवर करा जाएगा, बट अभी हम 10.12 So it is what? O Janardana, again please describe 10.18. O Janardana, again please describe in detail the mystic power of your opulences, I'm never how to read this word? Satiated. I'm never satiated in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. 10.8. जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। It is the qualification of spiritual master to present spiritual message in a sweet way, in a very attractive way. So हमारे आध्यात्मिक गुरु की ड्यूटी है कि वो हमें भगवान के जो अमृत रूपी जो शब्द है वो हमें बताए। Krishna is Arjuna's spiritual master. Arjuna is very fortunate. So, and Arjuna also is not just an ordinary human being. He has very high spiritual qualification. So he gets this knowledge from Krishna, and he becomes enlightened and blissful. So जो अर्जुन है वो बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण उनके आध्यात्मिक गुरु है, और अर्जुन भी कुछ सामान्य मनुष्य के समान नहीं है, और उन्हीं बहुत भाग्यशाली है कि उनके गुरु कृष्ण है।
So Krishna presents this knowledge in very sweet way, tasty way, and those who read Bhagavad Gita as it is, they also can confirm it. सो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण है बहुत ही सुंदर और मीठे शब्दों में भगवत गीता को अपने शब्दों में बताते हैं, और ये इसकी कंफर्मेशन आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं. The same way, the role of a spiritual master is to present this knowledge in attractive way, because because again, it is not just about to read the books. It is also about to do something practical, and in order to become motivated to do something practical, one should experience taste for hearing. So ये आपके आध्यात्मिक गुरु की ड्यूटी बनती है कि वो आपको इस अमृत रूपी शब्द को बताए, ताकि इन शब्दों को हम सुने ना, बट प्रैक्टिकली भी इन पे हम काम कर सकें. So here on this picture you see the jar with honey, and there are two ways how one can interact with this jar with honey. So आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें शहद है और दो प्रकार हैं जिसमें आप इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. Srila Prabhupada gives this Srila Prabhupada gives this example that one can lick this jar with honey from external side. He can lick this glass and he will not experience the taste of honey. So एक तरीका है कि वो शीशे का जार है उसको भारी रूप से चाटे, बट उसे शीशे के अंदर जो शहद है उसकी मिठास का अनुभव नहीं होगा. And at the same time, the second way how one can interact with this or deal with this jar with honey is just to take honey from this jar. और दूसरा तरीका है कि आप सिंपली शहद को जार से निकाल लीजिए. And what does it mean to take honey? It means to be practically engaged. So हनी निकालने का अर्थात यही है कि आप प्रैक्टिकली भगवान इंगेज्ड है, अपने मतलब सेवा में है. And and to lick the glass of this jar, it means to observe, to read Bhagavad Gita as it is, or to observe the life of practitioners, bhakti practitioners, from safe distance. और जार को चाटने का Safe distance. और जार को चाटने का यही मतलब है कि हम जो भगवत गीता है उसको हम पढ़ रहे हैं और अपने जो गुरु है बाकी लोगों को हम प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको. And of course, it doesn't transform one's life. और एक की जिंदगी को बदलता नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है. So, and now let's chant holy names of Supreme Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And on the next session, you will get to know how to see Krishna everywhere. और अगले सेशन में आप लोग देखेंगे कि हम कृष्ण को हर जगह कैसे देख सकते हैं. You see, very nice picture. How to see Krishna everywhere. The verses from 10.20 to 10.42 are about this. हम कृष्ण को सब जगह कैसे देख सकते हैं, उसमें ये 10.20 और 10.42 श्लोका में बताया गया है. Okay, just let's open something from here. What do we have here? Oh, so many things. Okay, but anyway, at the last verse of this chapter, Krishna says, but what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. So जो लास्ट श्लोका है उसमें बताया है, किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर इसको धारण करता हूँ. Means again, he controls everything. He is great. इसका मतलब यही है कि वो सभी चीजों के नियंत्रण करने वाले हैं, नियंत्रित करते हैं. And the last slide of this presentation asks us to take a small step every day. और जो आखिरी स्लाइड है इस पीपीटी की, वो हमें एक छोटा सा स्टेप लेने की लिए मोटिवेट करती है. So just read Bhagavad Gita. Hey Krishna, just read Bhagavad Gita every day. Even one shloka a day keeps Maya away. तो इसका मतलब ये है
भगवत गीता पढ़ने से हम जीवन में खुश रह सकते हैं. Did you translate about Maya? Can you repeat? I'm saying that shloka a day keeps Maya away. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि एक श्लोका पढ़ने से जो माया है भौतिक जगत में वो हमसे दूर रहती है. It is, of course, it is joke because one shloka is not enough. प्रभु जी बोल रहे हैं ये मजाक है क्योंकि एक श्लोक काफी नहीं है. Better to read more बेटर है कि हम और पढ़ें and to be practically engaged, as we told today. और प्रैक्टिकली हम भगवान की सेवा में इंगेज रहे. Hare Krishna. Okay, now let's move to the questions. If we have questions in Zoom or if we have questions in our audience, please किसी के अगर क्वेश्चन है तो ask प्रभु जी the से पूछ questions. सकते हैं. Let's Zoom में या see. फिर ऑफलाइन ऑडियंस में अगर किसी के क्वेश्चन है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं. Okay, online, offline. Oh, Pradeep Rawat. Pradeep Rawat is speaking, right? Hello, Prabhuji. Hare Krishna. Hello, sir. Hello. We don't see you. Where are you? Please switch on your camera. Actually, I'm somewhere. They, What he in is my saying, I don't understand. in my near my house there is a lots of noise, so that's why I came to some peace area to listen this. So that's why. प्रभु जी एक बार आप वापस से बोलेंगे आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही वॉइस में. Pradeep, maybe you can just write your question in the chat. Your mic is not good. Sound is not. Now, can you hear me? Now, much more better. Please ask your question. Actually, so basically, where I am lived, there is a very noise. So that's why I came to the some other places where is the dark places. So that's Good. why I listen to this classes. So that's why. That's okay, but what is the question? Actually, my question is to how we can be lived always blissful and the we know everything about that. We heard always read Bhagavad Gita, but mind is sometimes mind is always go to means uncontrolled. We know everything is actually, but mind is sometimes it's a very hard to control mind. So how we can control the mind, because actually I'm doing job and the lots of fear, lots of like that. So in meetings and like that, I'm sometimes I am very stuck. So how I can be live fearless in everywhere? That's why my question is. Okay. So are you going to translate in Hindi? अच्छा हाँ. Yeah, So, Prabhu ji- you're a translator, right? So प्रभु जी I thought you were talking about translating. Uh-huh. तो प्रभु जी जो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो माइंड है बहुत स्थिर नहीं रहता है. तो हम हालांकि भगवत गीता पढ़ते हैं बट तभी भी स्थिर नहीं रहता है. तो हम कैसे उसको स्थिर कर सकते हैं और कैसे ब्लिसफुल हमेशा खुश रह सकते हैं. Uh-huh. But where is he? He asked his question and he's disappeared. He's here. Okay, Pradeep Rawat. Hare Krishna, Pradeep Rawat. So, the answer is very simple. We have to follow 3 simple rules. तो इसका जो आंसर है बहुत ही सरल है. हमें 3 नियम पालन करने पड़ेंगे. We should chant attentively Hare Krishna Mahamantra every day. पहला है हमें अटेंटिवली हमें ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा. Then rule number 2 is to regularly and again attentively to read Srila Prabhupada's books. और जो दूसरा नियम है हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा. And the rule number 3 is to take support from devotees, is to have a Vaishnava association. So और जो नियम नंबर 3 है हमें वैष्णव एसोसिएशन वैष्णव संघ लेना पड़ेगा. उनकी मदद लेनी होगी. So in such way we will be protected and it will make us stable in spiritual life. So इस प्रकार हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और हमारा जो मन है स्थिर रहेगा. You can just take your Japamala everywhere.
और आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो जप माला है आप उसको हर जगह ले जा सकते हैं. And if you have few minutes of free time, you can just chant some additional mantras. और अपने कुछ खाली समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर सकते हैं. And also, it is quite easy to read books because now we have these books in our smartphones. और अब तो हमें जो पुस्तक है वो पढ़ना भी आसान हो गया है क्योंकि वो हमारे स्मार्टफोन में अवेलेबल है. So basically, it is just the question of desire. सो ये एक सवाल है कि हमारी इच्छा है या नहीं. And regarding Vaishnava association, it makes us stable because it helps us to uh, to maintain the values, Vaishnava values in our mind, in our intelligence. और वैष्णवों का संग करने से हमारा मन स्थिर रहता है और हमें ये प्रैक्टिस करने में मदद मिलती है. So these three things should help. You are asking how to become fearless. The answer is that one becomes completely fearless when he understands that he is not this body. सो आपका जो प्रश्न था कि हम निडर कैसे रहे, तो इसका एक ही उत्तर है जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है. But again, because it is not cheap thing to understand that we are not this body, so it is gradual process. It means we'll have to live with our fears for some time, for some years or decades. It will be part of our life, as well as this mind who is jumping here and there. It is just some kind of circumstances of our life. But anyway, we should follow this path and gradually. Well, even if mind is jumping, at least after some practicing, devotee he is able to be not so much, how to say, not so much influenced by activities of his mind. आपको ट्राई करना पड़ेगा कि फियरलेस आप इतना आसान नहीं है, चीप नहीं है कि आसानी से आप फियरलेस बन जाएंगे या फिर आप मानेंगे कि आप ये शरीर नहीं आत्मा है. ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे करके होगा और आपको अपना मन स्थिर रखने में मदद करेगा, बट टाइम लगेगा. It means that one becomes able to observe these emotions from the distance. Means fear is still there, but fear is fear, and myself is myself, and one doesn't become too much captured by this fear. You know. प्रभु जी बता रहे हैं कि जो डरने की और सबकी चीजें हैं वो रहेंगी, बट जो मेरा डर है वो डर रहेगा और जो मेरा अंदर जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है शरीर और आत्मा का वो रहेगा और उसमें अलग नहीं आएगा कुछ. So anyway, this process is gradual process of transformation of our hearts. We should just stick to these three things, and everything will be nice. ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा, बट हमें तीन चीज़ों जो बताई प्रभु जी ने उस पर हमें अडिग रहना पड़ेगा. These three things is Holy Name, Srila Prabhupada's books, and Vaishnava Association. जो तीन चीज़ है वो है भगवान का नाम, वैष्णवों का संग और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Okay, some more questions. किसी का Oh, thank you very much. Thank you for your nice question. Okay, so some more questions? किसी का और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है? हाँ? Everything is clear. I cannot believe it. How it is possible? I myself, I don't understand anything, but you understand. How it is possible? They might be having a good translator. Huh? It might be that they might be having a good translator. Okay. Well, maybe. Okay. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much for your kind attention, association. And now we are going to take prasadam, right? Yes. So it is our
next our program. And thank you very much for your attention. सो अब हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे अच्छे सेशन के लिए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हरे Окей. Харе Кришна, Харе Рама.